Good afternoon. Once again, welcome all of you. Today we discuss one part of the telephone number system. Without this telephone number system discussion, we not go ahead about IP address. Question is very simple for all of you. Only three participant today, and one more participant will be join as soon as possible. And remaining participant under exam, so it will okay. What they see this video. Uh, Anyone out of these three whose mic is very good, kindly unmute please. आप में से किसी का भी माइक जो अच्छा हो अनम्यूट करिए, अपनी आवाज सुनेंगे आप लोग। कनिष्का, आप अनम्यूट कर सकते हैं? Yes, sir. ओके। मैं आई राइट समथिंग ऑन स्क्रीन. This question for all of remaining participant also give the answer same time in the chat box. And Kanishka, you give the answer by sound, your voice. On screen, I just write one telephone number. Okay, this is the suppose 911202755164. I write one telephone number. I just imagine in India there is no corruption, no any political influences, everything ideal mode. And that means राम राज. आप कहते हो ना राम राज है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, we just assume कि there is no, everything is very okay. So now in this case I just write one telephone number. So my first question to you is this telephone number in the world where located? Which location this telephone number? Yes. Sir, India because वो 91 है. Very nice. And all remaining person you also must write in the chat box. Kanishka very give properly answer कि definitely this telephone number is belonging to India because this 91. Okay. So now Kanishka can you say कि this number this is the country code. It will be change. क्या ये change हो सकता है? Sir, I don't know. जो आपको are you add per your thing? No, sir. No, this is the fix. Very simple. This is the fix. Okay. First digit, very simple manner. Here the first digit, it may be either single digit, it may be either two digit, it may be maximum three digit. Okay. So this digit first, this is a country code and it maximum from 1 to 3 digit possible. In the case of India, definitely 91. This is the fix, and this telephone number either use mobile phone, either landline. Definitely every types of mobile communication, any types of landline communication. This is the fix. 91 is the fix and country code. Okay. Now अब इंडिया के अंदर बात करें, in which location in India this telephone number is it? Can you say? इंडिया में आपने बता दिया कि 91 that is India. Okay. Now my next question, India is a very big country. In which location? North, south, east, west, Delhi, Chennai, Mumbai. Which location? Are you able to say which location? Yes or no? Yes, Kanishka, tell me. Remaining participant, please write down. Sir, I don't know the code for different regions. Okay, ठीक है. Without delaying any time, I just explain every location. Okay. First, look this telephone number and keep in the mind any telephone number in India, या any world, there is any any disturbance or any changing. In this case, the first digit here in this my telephone number, country code. If you are asking your father and parent today, very easy manner. This is also known as ISD code, International Subscriber Dialing Code. Okay. This is a practical name in the field, and same time next this digit 2, 3, 4 digit. In my case 3 digit. It may be 2 digit, it may be 3 digit, and it may be 4 digit. This is fixed for sub area code. Sorry, area code. Sorry, this area in India. Which area? This may be 2 digit, 3 digit, 4 digit. For Delhi,
11, Mumbai for 22. This is also known as the STD code. So same time 120 is STD code, yeah, you can say area code. This is the fixed. This is the either Ghaziabad, either Noida. There are two districts nearby Delhi in UP, Ghaziabad, Noida. If Ghaziabad, Noida, anybody have a telephone number landline, in this case, this code is 120. Okay. If anybody have telephone number in Delhi, 11 is in the Mumbai, 22, 33 in the Chennai, and 44, I think, Kolkata. Okay. So this is also fixed, and this is local name is STD code, subscriber trunk dialing. Okay. This is also fixed. You can't change. This is a fix, and again this is a fix. Now, as per your grandfather and your parent, they are all aware about this number system. But further number system only aware by telephone working engineer. Next, okay. So 91120 publicly everybody very well known about this. Like in today 91 you are very well known. This is India. If move your parent 120 also very easy to know. But I am working in the our Department of Telecommunication and last 20 year in the BSNL. So definitely 21-year experience. So before when joining the BSNL, very clear that only telephone number system exists. This is the on your screen. So and then further, because Ghaziabad, Noida is too big area, तो फर्दर 2 डिजिट जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो हमारा बताता था गाजियाबाद नोएडा में किधर है, वेयर लोकेशन फर्दर 2 डिजिट डिफाइंड विथ सब लोकेशन सब एरिया. दिस इज द राजनगर. राजनगर इज मेन एरिया ऑफ द गाजियाबाद. ओके, दिस इज द मेन एरिया ऑफ द गाजियाबाद, राजनगर. ओके, दिस इज आल्सो फिक्स. ओके, इन राजनगर एवरी customer have telephone number starting by the 27. Yesterday we discussed local telephone number specification, copper wire, because from starting to till time copper media is the most important media for the telecommunication system. And what is distance covered by the copper media? Either 5 kilometer, either 6 kilometer. This means in every 5 kilometer radius, there will be telephone exchange will be available. If you are current today also move in any location, so you find out every 5 kilometer radius one BSNL telephone exchange, because from starting to till time BSNL is the main player of telecommunication. So definitely every 5 kilometer radius you can see BSNL telephone because copper wire. So now the next 2 digit will be fixed which telephone exchange. This is the exchange ID. अगला जो है कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज हर 5 किलोमीटर पे बढ़ता है. तो दिस इज द ALT सेंटर. This is the ALT center. ALT telephone. There one telephone exchange available in our LTTC campus. So now from left hand side to right hand side up to 55. Up to 55. This is the fixed. And I am working with BSNL, so I see the number and easily say this number which location will be available. Definitely this telephone number is available in ALT center campus. So from 91 you can't change, 120 same manner can't change, 27 also not change, 55 also not change. But from this number pattern, we are easily identify this number which location in India, in the world. Now the next 3 digit. What is the first digit? Kanisha, what tell me? What is this is the customer serial number. So first customer come to the ALT center telephone exchange and apply the telephone system. So what is the first telephone number given to him? This is the starting by the 000. Next customer 001, next customer 002, and if up move to
999. In our realty center telephone exchange, total 1000 number of customer is possible. And on your screen, this telephone number is my landline number. It's a real number. It is a my land. If you are dialing this number, I just pick up my handset and hi, hello. Okay. This is a my landline number. So now very simple manner. Again, I repeat, any telephone number, doesn't matter, either mobile phone telephone number, landline phone telephone number, every telephone number, basic idea is very simple. All telephone number divided in the two part. One part is the fixed part and another part is the customer serial number, which number of customer given you have taken the service. In this my scenario, 91, this is the country code. 120, this is the area code. This is also known as STD code. You are lucky in today ki what is the meaning of STD, but upcoming your junior, upcoming your new generation, they, if you are telling ki in my time one telephone number STD number will be dialed, so they can't believe. Okay, just like you ki I am asking to you Kanishka ki 120 to you no, I don't know. Okay, तो आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो कोई एसटीडी आईएसडी का मतलब ही नहीं जानेंगे, भूल जाएंगी, क्योंकि अपकमिंग टाइम नोबडी कॉलिंग एनी टेलीफोन बाय डायलिंग द नंबर. दे जस्ट दिस टाइम वेरी गुड एग्जांपल, जूम. You are connect with me, not dialing any number, just I sending one link, you just click and join me. And currently I, either you and every more person, your mate here is, all are communicate and listen to me and communicate to each other. So this is the future communication. Okay. So now this telephone number divided into two parts. 91 country code, area code, sub area code. Ghaziabad, Noida, STD code. There are two cities. Noida is Ghaziabad. Hopefully, ki everybody very well known. Where is the Noida? Where is the Ghaziabad? I think in India में मुझे लगता नहीं किसी को नहीं पता होगा. ठीक है. And 55 digit telephone. So because telephony system started by the landline, so telephone number planning is also described by the landline number system. Okay. Now important point. Again I repeat. +91 120 27 55. I separate na to be easy for your understanding. Okay. 164. This is the telephone number my. But if anybody connected to LT Center Exchange, so what is the first telephone number? +91 120 27 55 000, and it have moved to the next in the last telephone number dot. So this is a 91 120 27 55 -999. Okay. So 1000 customer is possible in this telephone number. If customer is more than 1000, so in LT Center one more level is available. 28 alert 55 and 28. Another option is available also here. This is a 28. So in LT Center total 2000 telephone number possible in the old time. Currently after coming the mobile communication, this system will be completely changed. In 2003-4, most popular scam, are you sometime listening 2G scam? Are you know 2G scam? 2G घोटाला सुना है ना? 2G घोटाला आया. When 2G scam come, all concept will be confused. Mobile number, same pattern, but directly mobile number you can't identify to compare with this telephone number. आज का जो मोबाइल नंबर भी है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस तरह से आप उसको स्पेसिफिक वो नहीं कर सकते. दूर 91 तो यू कैन इजिली, 91 कंट्री कोड नॉट डिस्टर्ब. ओके, बट क्योंकि 2G घोटाले में बहुत गड़बड़ हुआ, तो व्हाट केस उस केस में क्या किया गया? ओके, any number you can allot, 91 98 94 something mobile number. Okay, but there it convert in the coding. Every number convert their coding, and coding is just follow this situation. अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है तो नंबर के पीछे एक कोडिंग दी जाती है. वो कोडिंग का जो लैंडलाइन में कोडिंग की जरूरत नहीं थी. देयर इज नो स्कैम.
In landline case, no coding required. But in the mobile communication, upcoming communication, due to the 2G scam, definitely pattern will be same. So just coding follow by the, मतलब होता ना एक वो दे दिया आगे वो रख दिया लेकिन पीछे हमने कोडिंग वही कर दी, तो जिससे हमारा अभी भी वही फॉलो होता है. ठीक है. तो नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न जो याद रखने वाली है, कीप इन द माइंड द फर्स्ट टेलीफोन नंबर एंड लास्ट टेलीफोन नंबर नॉट गिवन टू एनी कस्टमर. अगेन आई रिपीट, पहला और लास्ट टेलीफोन नंबर किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते. नॉट गिवन टू एनी कस्टमर. ओके. द फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज known as exchange ID. This is the exchange ID. If anybody asks what is exchange ID, earlier a lot of crime will be in India. Telephone number is the important communication system. If police, CBI come to the exchange, yeah, any report in the world, so just they never given what is the address of the telephone exchange. Just tell exchange ID. For example, you are all are going for exam, so you are never given exam by your name. It will given by the your roll number. So same time, telephone exchange ID is the important. This is not given to any customer. Now in the last, जो last telephone number है, this is the broadcast ID. This is the broadcast ID. This is also not given to any customer. This is a broadcast ID. What is the meaning of the broadcast ID? पहले मैं हिंदी बोलता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा. आज का जो समय है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है. यू आर वेरी लकी. अभी किसी का बर्थडे हो जाए, आपके दोस्त का बर्थडे हो जाए, पेरेंट का बर्थडे हो जाए, घर में एनी बर्थडे एनी सेलिब्रेशन डे, तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन उठाया, जस्ट यूज मोबाइल फोन, सेंडिंग व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर ना. बिना नाक कान का जो टकला होता है ना मोबाइल, एक लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि हमारे मोबाइल में ना व्हाट्सएप में क्या होता है, एक बिना नाक कान का टकला है, उसको भेज दो, अंगूठा दिखा देगा. है वेरी सिंपल मैनर. ठीक है. तो टुडे कम्युनिकेशन वेरी, मतलब बर्थडे विश या एनी विशिंग इज वेरी इजी. बट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर जस्ट गो टू द ट्विटर, मन की बात, काम खत्म. ठीक है ना. हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, मन की बात करते हैं और काम खत्म हो जाता है उनका. जस्ट मन. ओके. तो our prime minister is very simple manner, just go to the Twitter and मन की बात कह दिया, it is okay. But आपके लोगों के लिए भी बहुत आसान है. बट जब हम वी आर स्टूडेंट दैट टाइम, आवर इंजीनियरिंग कॉलेज 1994 व्हेन ज्वाइन माय इंजीनियरिंग कॉलेज 1994. आप सब पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे ना, ऑल आर न्यूली, मेरे लिए बहुत आप लोग यंग हैं. तो कॉलेज के टाइम में, क्योंकि यू आर इंजीनियर, इंजीनियर नेवर चेंज. इंजीनियर की खासियत होती है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैच करेगा. पढ़ाई करेगा नहीं वो, पढ़ेगा कि उसी दिन जब लास्ट दिन होगा, परीक्षा होगा, तभी पढ़ाई करता है, मैं पढ़ेगा नहीं. दिन में सोने की कोशिश करेगा, निशाचर होगा. ठीक है ना, ये सच्चाई है. ठीक है. लेकिन काम, किसी का बर्थडे हो या किसी को, उसमें कोई कोताही नहीं, वो काम करना ही है उसको. बर्थडे मनाना तो मनाना है. ठीक है. तो हमारे टाइम में, इन आवर टाइम, हाउ टू विश ईच अदर, दैट टाइम ग्रीटिंग कार्ड बहुत चलता था. आज भी है ग्रीटिंग कार्ड, लेकिन हमारे टाइम में ग्रीटिंग कार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. या हमारे जैसे आज प्रधानमंत्री जी ट्विटर में वो बोल देते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी, आवर दैट प्राइम मिनिस्टर, दे आर आल्सो मन की बात, वो भी मन की बात करते थे. बट दे हैव टू ऑप्शन, नॉट आज की तरह नहीं ट्विटर पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए. उनके पास ओनली टू ऑप्शन. वन ऑप्शन रेडियो टेलीविजन, अनदर इज द टेलीफोन नंबर. ओके. तो टेलीफोन नंबर में क्या होता था कि जब हम फोन उठाते थे ना, तो एक अनाउंसमेंट आता था. आजकल भी आपके सामने अनाउंसमेंट आता है ना, कोरोना से बच के रहो, खांसता रहता है ना, परेशान हो जाते होंगे आप लोग. ठीक है. तो वहाँ पे वो आता था,
तो मैं आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी रिपब्लिक डे, सम टाइप मैसेज विल बी व्हेन जब पिकअप द फोन तो पहले आपको ये आवाज आती थी, ठीक है। तो दिस साउंड इज नॉट any in air, openly in air. This is a particular number will be feed and this particular number is the last number. Last number पे feed होता है, कोई भी हवा में बातें नहीं होती है। तो this is known as the broadcast ID, ठीक है। So again I repeat, any telephone number divided in the two part. One part is the fixed part, another part is the customer part. Fixed part help of the fixed part, you can easily identify this telephone number, which location located in the world, and customer part is the customer serial number, and the first telephone number या first serial number and last serial number not given to any customer. First serial number just use as a identity ID of exchange, and the last telephone number use as a broadcasting message. Okay, so this is the specification of the telephone number in the today's session. If you are easily understand this my session, so definitely tomorrow very easy manner easily identify learn about IP address. Okay, IP address आपको मैं इस तरह बता दूंगा कि आपको बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो टुडे अगेन आई रिक्वेस्ट यू, कल भी आप इतना ही 15 to 30 मिनट के लिए ज्वाइन करिए और हम लोग इतना ही करेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। तो कनिष्का समझ में आ गया आपको? सौरभ, शेख समीर, आप तो बार बार आए, आपको तो बात ही नहीं पता चला होगा। सतीश, सात्विक आज नहीं थे, ठीक है। यस, आस्क मी। हैंड राइज कर दिया तो पूछना भी बनता है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। टुडे वाज सफिशिएंट। बोर नहीं करना, इतना ही काफी है। रिपीट करिए अगर आई शेयर दिस वीडियो अगेन, सी इफ नॉट एनी अंडरस्टैंड, tomorrow again ask question. Okay, thank you.